तो टंग यहाँ पे क्या है दिख रहा है, टंग इज अ हाईली मस्कुलर ऑर्गन, ये सबसे बेसिक पॉइंट है। टंग के सरफेस के ऊपर क्या होता है, यू कैन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैपिले। ये जो आपको दिख रहा है दिस स्मॉल डॉट डॉट स्ट्रक्चर, सो दीज आर व्हाट फिलीफॉर्म पैपिले, ये बहुत ही छोटे होते हैं। एक और पैपिला कौन सा होता है, फंजीफॉर्म, विच कंटेन्स टेस्ट बर्ड, ठीक है। और जो सबसे बड़े पैपिलास होते हैं विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टंग, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, circumvallate papillae, ठीक है। So basically there are three different types of papillae present, okay, circumvallate, pungiform, filiform। और एक और टाइप का पैपिले प्रेजेंट होता है which is present on the lateral side of the tongue which is called as foliate papillae। Is it clear? समझ में आ रहा है? So these are the different types of papillae, ठीक है। एंड सबका एक बेसिक फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन लाइक टेस्टिंग फूड, ओके। Yes, sir. क्लियर है? सो यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द पैपिले। फंजीफॉर्म जो होगा उसका नाम फंजीफॉर्म क्यों है, बिकॉज इट्स टॉप मोस्ट पार्ट लुक्स लाइक द मशरूम होता है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फंजीफॉर्म पैपिले। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, दिस इज द फंजीफॉर्म पैपिले। Okay, so if you see, so this is a fungiform papillae, and at the bottom of this fungiform papillae you can see there are lots of test buds are present, and these test buds help in the testing different kinds of chemicals which comes in contact with the tongue when we take food, okay। So test receptor कहाँ present होते हैं, at the bottom of these fungiform papillae। और जो फेलिफॉर्म पैपिले होता है दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस, मतलब उसके पास कुछ ऐसे स्लाइटली एक्सटेंशंस होते हैं above the tongue surface, so if you open the tongue you can see there are slightly small some thread like structure coming out of it, तो वो क्या होता है, that is a filiform papilla, okay। Is it clear? Yes, sir. So today we will see the structure of the teeth, and then we will see different layer of the alimentary canal. Have we done this salivary gland? No. This also, then we will see that. अच्छा, एक आपको ये पता है ना कि एटलीस्ट आई यू ऑल नो दैट व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर द ह्यूमंस, ये तो पता है ना, दैट इज अ बेसिक पॉइंट, सो दैट इज व्हाई हाँ, sir. clear that. Yes, sir. Okay? So directly I have moved to this anatomy of the teeth, okay। So if my screen is visible, so the first thing is that कि ये जो होता है, the teeth are what, they are secured in the alveolar process of the jawbone। alveolar का meaning क्या होता है, you can see there is a hollow structure present here in which the teeth are secured, okay। and जो gingiva होता है, okay, gingiva is a soft tissue which lines the alveolar process, मतलब देखो यहाँ पे, if you see this is the areolar bone, can you see, देखो यहाँ पे कुछ pores आपको दिख रहा है, these are the areolar bone, and इसके around में जो covering होती है, soft covering, that is called as what, gingiva। और इसके अंदर फिर क्या present होता है, teeth, okay। So एक important यहाँ पे क्या है, periodontal ligament holds the teeth in the socket of the jawbone, this is very important point। If you want you can note down in your notebook, periodontal, देखो the name itself suggests, peri means what, surrounding, dental means teeth, तो ये जो ligament होता है, this ligament, let me just zoom it out, yes you all can see, यहाँ पे दिख रहा है, मैं highlight कर देता हूँ, this is the periodontal ligament, ये दिख रहा है आपको, this thread like, हाँ, sir. so ये क्या है, this is periodontal ligament, इसका main function क्या होता है, it helps in the attachment of teeth in the jawbone, okay। अब आपको समझ में आया हो कि जब अपना जो deciduous teeth जब लूज होता है उस समय क्या होता है कि this ligament will degenerate, है ना, then only it becomes very easier for us to remove the teeth, okay। और किसी पर्सन का जो टीथ बहुत ही लूज होता है या फिर बहुत ही वीक होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, दिस लिगामेंट माइट बी वीक इन दैट केस, okay। So this is a very important point, which ligament helps in the attachment of the teeth, this periodontal, Period. okay।
सो प्लीज नोट डाउन दिस। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। Yes, sir. फिर यहाँ पे Yes, क्या sir. है, द नेक्स्ट इज व्हाट, द टू मेन पार्ट्स ऑफ द टूथ इज क्राउन, which is the projecting portion above the gum line, and the root which is embedded within the maxilla or the mandible. Sometimes students they get confused that what is a maxilla or the mandible. So I hope you know these two jaws, है ना, that upper jaw and the lower jaws are called as what? Maxilla and the mandible respectively. Okay, this lower jaw will be called as what? Mandible, and upper jaw is called as what? Maxilla. ठीक है, is it clear? तो टीथ दोनों जॉज में प्रेजेंट होते हैं ना, अपर जॉ एंड लोअर जॉ में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इफ यू सी, यहाँ पे देखो, लुक एट दिस इमेज, let me just hold it out. Is this image clear? This which is present on the left side of the screen, ये clear है? Yes, sir. The crown is the uppermost part which is exposed to the different kinds of chemicals, food and all. और जो lower part है, that is present, which is present inside the root, which is present inside the jaw, is called as what? Root. Okay, and there is a very thin line present between this. So in some textbook they have labeled this as a neck. So you can consider that the tooth has a 2 part or the 3 part. Okay, you can consider that according to your convenience. But basically क्या है, crown is the uppermost part which is exposed to the upper part of the chemicals, और root क्या है, lower part है, which is embedded inside the socket. Okay, jaw bones के अंदर है, और जो बीच का जो space है, that will be called as neck. Yes, is it clear? Yes, sir. Okay, so this would be the second point after the periodontal ligament. उसके बाद फिर next यहाँ पे क्या है, both parts contain an inner pulp cavity containing loose connective tissue through which the fiber and blood capillaries run, and this region of the pulp cavity that runs through the tooth is called root canal. Canal आपको आपने नाम सुना होगा ना, कि canal is just a kind of a tube-like structure or the opening. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना human reproduction में, एक होता है inguinal canal. I hope you all remember ना, जहाँ से Yes, yes, sir. बाहर आता है. So in the same manner, एक canal जो होता है, which is coming from the root of the teeth, that is why this canal will be called as what? Root canal. इतना clear है? Okay, so you can Yes. canal here, इसमें भी present है. So these are the root canals, और ये जो है इसके बीच में ये जो pulp cavity है, this contains some soft tissue. उसका नाम क्या है? It is just a kind of loose connective tissue. So you can note down this. The pulp cavity of the tooth contains which type of tissue? Loose connective tissue. उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, बट इनसाइड द पल्प कैविटी लूज कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? ऐसा कोई है जिसको डाउट हो रहा है या फिर कंफ्यूजन हो रहा है? No, sir. ओके, कॉन्फिडेंट. चलो फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट टर्म कौन सा है? दिस इज अ रूट कैनाल. Okay, so a canal which is arising from the root of the teeth is called as root canal, and this root canal possesses different kinds of nerve fibers, blood vessels, artery, veins. तभी देखो रूट कैनाल जो ये जो होता है, रूट कैनाल जो प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग कुछ यहाँ पे क्या करते हैं, we will try to operate this to treat some kind of disease, है ना. तो देखो बहुत पेनफुल होता है रूट कैनाल सर्जरी. Why? Because this root canal has fibers in it, nerve fibers होते हैं. That is why even the देखो tooth pain जो होता है बहुत ही painful होता है. क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे nerves होते हैं. ठीक है, is it clear? Yes. तो 3 terms हम लोगों ने देखा. पहला कौन सा देखा? Periodontal ligament. Second is the parts of the teeth. Then the pulp cavity which contains loose connective tissue. Okay, उसके बाद जो है next is the pulp cavity. If you see this pulp cavity is surrounded by a bone-like tissue. ये जो pulp cavity है ना इसमें बीच में, so this is surrounded by a bone-like cavity. ठीक है, तो ये जो wall है, ठीक है, ये जो surrounding medium है, this is called as dentine. दिख रहा है आपको यहाँ तक पूरा जो प्रेजेंट है, ये पूरा, तो ये क्या है? This is dentine. So pulp cavity is surrounded by a bone-like structure
or the tissue that is called as dentine. Is it clear? समझ में आ रहा है? So Yes. we discussed dentine, we have discussed pulp cavity, we have discussed periodontal ligament, we have discussed areolar bone, और यहाँ से जो निकलता है रूट कैनाल, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद dentine in root is covered by even a harder material, cementum, and in ground dentine is covered by enamel, one of the hardest. अब देखो यहाँ पे enamel क्या है, which is the one of the hardest part of the body. तो ये जो this अब मैं ये image refer कर रहा हूँ. Okay, I'm referring this image. You can refer this also. ये दिख रहा है. ये क्या है? This is dentine है ना? This entire structure is what? Dentine. Okay. So dentine in the root or at the bottom of the bone is covered by a hard material which is called as cementum. Cementum Q because it helps in the attachment of the bone to the jaw bone, to the teeth, to the jaw bones. Okay, so that is why it is called as cementum. Okay, and enamel, which is the hardest part. So enamel covers the pulp cavity, or this not a pulp cavity, but this dentine from the upper side. ठीक है, तो ये समझ में आया. लोअर साइड में क्या प्रेजेंट होगा? सीमेंटम. अब क्या प्रेजेंट होगा? इनामल. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूँ. सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? पेरियोडोंटल लिगामेंट. ओके, सेकेंड पॉइंट क्या था? उसके बाद यस, उसके बाद Alveolar bone. no, before that what we have discussed? Crown, neck or root. So in simple word, parts of the teeth है ना? Parts of root. Then we have discussed pulp cavity. उसके बाद टिश्यू प्रेजेंट इन अ पल्प कैविटी है ना? कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? इट इज Loose connective tissue. Then we have discussed root canal. Okay, root canal. Then we have discussed what? Dentine. Yes, dentine. Dentine का जो upper portion होता है, that is covered with the enamel, and the lower portion is covered with the cementum. Cementum. So, enamel. Excuse me, sir. बताओ. सर आज पर्पल हाउस का भी था लेकिन उनको लिंक नहीं, उनको क्या हुआ? उन लोग को लिंक नहीं मिला है लेक्चर का. अभी तक लिंक नहीं मिला है? अच्छा ठीक है, नहीं सर. मैम को बोलता हूँ. तो एक काम करो आप लोग, अभी ये मीटिंग में सिर्फ 8 मिनट बाकी है ना, तो आप लोग फिर से ज्वाइन करो. ये मीटिंग में फिर से स्टार्ट करता हूँ, देन हम लोग सब फिर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक. ओके, और मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसका. ओके, हाँ. तो अभी ये लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा? स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ. ओके, डिफरेंट पार्ट्स. ये पूरा 7 पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, कोई डाउट? No, sir. चलो ओके, तो मैं फिर से मीटिंग स्टार्ट करता हूँ और मैम को मैं कहता हूँ कि शी विल सेंड द लिंक. ओके, चलो बाय.